विचारसार आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जड्यन्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकं विदधतीं पद्मासने संस्थिताम् वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् बुद्धिप्रदां शारदाम्। पठामि संस्कृतं नित्यं पठामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। हरे कृष्ण। तो हम कल क्या क्या पढ़ चुके हैं? समश्रुति, फिर संपरिभ्यम करोतो भूषणे, ठीक है। तो समश्रुति समोरुहु स्यात् सुटी, हाँ ये तो अब प्रभु जी 2 बार रिवाइज हो गया, तो विसर्ग हो गया। संधि आज शुरू करना। ठीक है, विसर्ग संधि आज शुरू करते हैं। देखिए थोड़ा सा संस्कृत में लिखा है। फर्स्ट आई विल रीड द संस्कृत पार्ट। यू कैन टेक अ पिक्चर एंड अपलोड इट। विसर्ग संधि। पाणिनीय सूत्राणाम अनुसारेण विसर्ग संधौ कश्चन क्लेशो वर्तते। So according to Paniniya Sutra, in Visarga Sandhi, there are some difficulties. यथा कवर्गे पवर्गे च परे जिह्वा मूल्यो उपधमानियो भवतः। Jihva Mulya and Upadmaniya. You remember when I was teaching the science of pronunciation, I mentioned. Huh? Yes, yes. So Jihva Mulya and Upadmaniya. These are part of the Vedas. यथा बालः करोति, बालः करोति, this is the word. वृक्षः फलति, वृक्षः फलति। तो बालो गच्छति प्रथमो भागः इत्यादो गकारे भकारे च परे कुप्पुः कापौ च इत्यस्य कूर् तो न प्रवृत्तिः। So balah karoti, when they pronounce this kind of words in the Vedas and sometimes at Laukik Sanskrit also, there are two kinds of Sanskrit, Laukik and Vedic. So in Laukik also sometimes balah karoti, it will be pronounced like balah karoti, balah karoti. Vriksha falati, vriksha falati. So one extra letter, half letter will come in between. That is called Jihva Mulya. इत्येतादृशाः संशयाः विसर्गसन्धौ बहुषु स्थलेषु समुद्भवन्ति. So this kind of confusion happens in many places. You understand? Because visarga you have to pronounce and immediately there is another letter. So balah karoti, balah karoti, this kind of pronunciation comes. Balah, okay, understood. Then you are telling bals. How we are pronouncing? Bals. Balah karoti. Bala. Visarga is balah, and now again Jihva Mulya bala, only bala.
ओके ओके। So it can be ka varga or pa varga. Okay. In these two cases, it happens. If ka varga is there, like balah karoti ka varga and vriksha phalati fa varga. So इत्येतादृशाः संशयाः विसर्गसन्धौ बहुषु स्थलेषु समुद्भवन्ति. एतादृशान् संशयान् अपाकर्तुं, to eliminate this kind of confusion, असिद्धत्वं परिशीलनीयं बहूनां सूत्राणाम् अर्थानां तात्पर्यं हृद्गतं च कर्तव्यं भवति. So to remove this kind of confusion, bahunam sutranam arthanam tatparyam, you have to memorize many sutras and you have to understand their deep meaning and what they are being applied, etc. Hridgatam, you have to memorize them. Ataha atra bahunam sutranam arthaha sangrihya likitaha. So when this kind of situation happens, you need to know many sutras, and here we have a collection of sutras. अतएव विसर्ग संधि संबंधिनी सूत्राणि टिप्पण्यां न उद्धृतानि. So there are many sutras. Basically, they meant to say that there will be many sutras in Vedas, but we are mentioning the prominent sutras, not all the sutras. So now this balah karoti and vriksha phalati, these things will be clear. Sakara, this dantya sa, when it comes. Today many students joined. Rakhi Bhattacharya, where have you been for so many days? Okay. तो आज हम विसर्ग संधि का पाठ कर रहे हैं. विसर्ग संधि क्या होता है? जब दो वर्णों के बीच में एक विसर्ग आ जाता है तो विसर्ग का भी उच्चारण किया जाता है. जैसे बालः करोति, बालः करोति, तो एक हल्का सा फ जैसा या प जैसा वर्ण उच्चारित होता है, छोटा सा, बालः करोति. इसको जिह्वा मूल्य उपध्मानीय नाम से जाना जाता है. अब इसी के बारे में चर्चा आगे हो रही है. तो इसीलिए विसर्ग संधि का आविष्कार हुआ है. विसर्ग संधि में हम देखेंगे किस किस परिस्थिति में विसर्ग का लोप हो सकता है, विसर्ग का दूसरे वर्णों में परिवर्तन हो सकता है, ये हम अभी जानेंगे. तो अभी सकार को समझते हैं. क फ प फान वर्जयित्वा, का ख और पा फ, एक्सेप्ट दिस 4 letters. वर्जयित्वा, कर्कश व्यंजने परे. Pare is Saptami Vibhakti. When the para varna is khar pratyahar, except ka, kha and pa, fa. Okay? So this para varna is khar pratyahar. What is khar pratyahar? Khafa chatatha, chatatab, kapai, shasasar. This is khar pratyahar. Visargasya sakaradesho bhavati. So whenever except these 4 letters, khar pratyahar is there. So khar pratyahar is khafa chatatha, chatatab, kapai, shasasar. So first column, second column, yara lava and shasasa. These are the letters which are known as khar pratyahar. So if the purva varna is a visarga and para varna is khar pratyahar, shasasa ityateshu pareshu tu vikalpena sakaro bhavati. So then the visarga gets converted into sakar, dantyasa, like purushaha plus tatra. Purushaha plus tatra, there is a visarga.
and tatra. Tatra is khar pratyahar. So it will become purushastatra. Purushastatra. So this sa is actually visarga. Okay. Remember, sa is visarga. Like Rama is the pratipadik shabda. Rama plus sun. Subvibhakti. So that Dantyasa becomes Visarga. So Visarga was actually before Dantyasa itself. So here vice versa, the Visarga gets from Sa, Visarga becomes. Now from Visarga we are going back to Sa. Purushaha plus Tatra, Purushas Tatra. प्रभु जी प्रभु जी इसमें एक चीज बोली है, इफ क ख प वर्जिता वर्जित्वा, राइट? Yes. देन मीन्स काफ और उसके अलावा सब जो भी खर प्रत्याहार में होगा एक्सेप्ट दिस क प फ, राइट? Yes, see, khar pratyahar, khafa, chathatha, chatatab, kapay, Yes. shatasar. These are khar pratyahar. So, Yes. first column, chatatapa and khachathapa. These two columns plus bottom, shasasa and yarala. This is called khar pratyahar. Yes. Okay? Yes. So, 10, 16 letters are khar pratyahar. Out of that, ka, kha and cha, cha we are eliminating. So 12 letters are there. So if 12 letters are there, the Paravarna and Purvavarna is Visarga. So then the Visarga will get converted into Sa. Purusha plus Tatra, Purushas Tatra. Yes. ये फुटनोट कश्चन नियम विसर्गस्य तथयो परयो सकार च छयो परयो शकारः टठयोः परयोः शकारः ससस इत्येषु परेषु विकल्पेन क्रमात् सससः एव आदेशाः भवन्ति। इसका मतलब क्या हुआ? Question. This is same. It's very simple. Like before we have done one sutra that Jastva Sandhi. In Jastva, there was a sutra Jayo Honya Tarasyam. प्रभु जी चतर्व संधि जिसमें व्रज्यता था। हाँ, चतर्व संधि, चतर्व संधि। So very simple. If the Paravarna after the Visarga, if the Paravarna is Dantya like Tatha, Dadha, Na, it will become Sa, Dantya Sa. If the Paravarna is Talavya Varna, Cha, Cha, Ja, Jha, then Visarga will become Talavya Sha. If the Paravarna is Murdhanya Varna, Ta, Tha, Da, Dha, Na, Ta, Tha, Da, Dha, then the Visarga will become Murdhanya Sha. So 3 Sa will happen, Dantya Sa, Talavya Sha and Murdhanya Sha, depending on the Paravarna. If the Paravarna is Dantya, it's Dantya Sa. If Paravarna is Talavya, it's Talavya Sha. If Paravarna is Murdhanya, it will be Murdhanya Sha. That's it. Got it? Naschabhya Prashna. Examples are given in subsequently. Devadatta plus Cha. Cha is a Talavya Varna. So Devadatta, Cha. Now this Sa will get converted into Talavya Sha. Devadatascha. Sundaraha plus Chhatraha. Sundaras Chhatraha. Talavya Sha. Dayamanaha plus Tittibhaha. Tittibha is a kind of bird. And Dayamanaha is flying. So Dayamanaha plus Tittibhaha. Dayamans Tittibhaha. Okay, Dayamans Tittibhaha.
So here, sa will come in every place, but that प्रभु dantya जी sa will इसमें दो convert. Huh? in this right first visarg, then we have sa se sha also, right? Yes. From visarga, it will get converted into dantya sa, as I mentioned. Visarga is dantya sa basically. So dantya sa will come first, and from dantya sa, you will make it talabyasha, dantyasya, or murdhanyasha, depending on the paravarna. If paravarna is dantya, it will remain dantyasya itself. If paravarna is talabya, the dantyasya will get converted into talabyasha. If the paravarna is murdhanya varna, tata, then the dantyasya will become murdhanyasha. That's it. And these sutras we have studied before. Schutva sandhi, stohos chunas chuhu will make dantyasya to talabyasha. Shtunastu will make dantyasya to murdhanyasya. That's it. So Purushas Tatra Devadattascha Sundaras Chhatra Dayamana Shtitibha. Okay? That are again becoming Sundara Shatra also, Devadastasya and Dayamanashtitibhaha. Asterisks given an explanation Vishesa. Cha sha sha tesu paresu sutra sandhi, that is written. Tatata tesu paresu sustvastashti sakara deshantarang bhavati. Footnote. Yes. So I have already explained that the dantasya, depending on the paravarna, will get converted accordingly. अगर बाद वाला वर्ण तालव्य वर्ण है तो दंतस्य का तालव्यश हो जाएगा. अब बाद वाला वर्ण मूर्धन्य वर्ण है टाठा डाढ़ा तो दंतस्य का मूर्धन्य में कन्वर्जन हो जाएगा और वो हम पहले ही सीख चुके हैं. तो ये सकारादेशानंतरम भवति, पहले तो विसर्ग का दंत सकार होगा फिर दंत सकार का परिवर्तन होगा डिपेंडिंग ऑन द लेटर वर्ण. दैट्स इट. हो गया. This is understood. Everybody understood? Is it clear for everybody? Yes. Yes. Very good. बोलिए. How we can understand that it is Talavya, Murdhanya, Sasha? That is, you don't know the varnas. That means you did not attend the previous classes. I explained which are Murdhanya Varna, which are Talabya Varna. Ichu Yashanam Talu. E, Cha Varga, Cha, Cha, Ja, Ja, Ya and Sha. These are Talabya Varna. Which are soft palate, hard palate. This is the first. I see, I understood. I know where it is. Thank you. Yes, so Ritu Rashanam Murdha, Ritu Lashanam Danta. This is what is applied here. In Sandhi, it is very important to find out which are Murdhanya, which are Talabya, which is hard palate, which is soft palate, which are dental, which are guttural, and which are nasal. These 5 types of main letters are there. Okay. Now, Jihva Mulyah Upadhmanyascha. Payah plus Shitalam. Payah Shitalam. Payah Shitalam. Sridhara plus Sashtaha. Sridhara Sashtaha. Sridhara Shashtaha. So one time you can do. See, when the Paravarna is Talabya or Murdhanya. When the Paravarna is either Talabya or Murdhanya. You can convert it to Talabhyasha and Murdhanyasha respectively, or you can keep it as it is. So Sridharaha plus Shashtaha, you can do Sridhara Shashtaha or Sridharaha Shashtaha as it is. So 2 options are there. But when the Paravarna is Dantya Varna, Tatha Dadhana, then Visarga must be converted into Dantyasa. There is no other option.
But if the Paravarna is Talabya Sha or a Talabya Varna or Murdhanya Varna, the Dantasya can be converted into Talabya and Murdhanya, or you can keep it as it is. Okay? Now, Visarga Sandhi plus Shasasa. Sridhara, Bhaktaha plus Sevate. Bhaktas Sevate. Bhaktaha Sevate. Okay? So it's basically the Paravarna is directly Talabhyasha, Dantyasya or Murdhanyasya. Then you can do this Visarga Sandhi or you may not do it, it's up to you. Okay, this is done. Jihva Mulya Upadmaniyascha. Kakha Ityetayoho Parayoho. Jihva Mulya Pafa Ityetayoho Parayoho Upadmaniyascha Visargasya Sthane Vikalpena Bhavati. So in two places, the Jihva Mulya and Upadmani happens. When Ka and Kha is the second letter, Ka and Kha is Paravarna. Then what happens is called Jihva Mulya. When Pa and Fa is letter, then what happens is called Upadmaniya. This was the question when I was teaching the science of pronunciation. This you asked, what is Jihva Mulya and Upadmaniya? Then I said that in the context it will be clear. Now you will be able to understand. At that time, if I would have made you understand, you would not have understood. Remember? Gauranga, Pradipta Gauranga? Yes. I asked. Now you can understand. See, what is Jihva Mulya and what is Upadmaniya? Tarunaha plus Karoti. तो यहाँ पे शर्त ये है कि पूर्ववर्ण विसर्ग होगा और परवर्ण का या खा होगा, तब जो परिवर्तन होगा उसको जिह्वा मूल्य कहेंगे। और जहां पे पूर्व वर्ण विसर्ग होगा और परवर्ण पा या फा होगा, तब जो परिवर्तन होगा उसको उपधमानीय कहेंगे। आई बात समझ? तो जिह्वा मूल्य कंडीशन विसर्ग एंड काखा, उपधमानीय कंडीशन विसर्ग एंड पाफा। क्लियर? उदाहरण, तरुणः प्लस करोति, तरुणः करोति। See this kind of two marks cane, you kind of thing. This is used in the Vedas, sometimes in Laukik grammar, but not mostly it's used. So this is Jihva Mulya. Jihva Mulya and Upadmaniya, they are used the same symbols. But when Kakha is there, you have to understand it's Jihva Mulya. When Pafa is there, that is Upadmaniya. So Tarunah Karoti, Purusha Khanati, Purusha Khanati. Shyamah Pachati, Shyamah Pachati, Vriksha Falati, Vriksha Falati. So basically in the Vedas you can pronounce it Tarunah. You say Tarunah Karoti, Tarunah Karoti. A kind of pa letter. Some letter in between comes which is not very clear. That is Jihva Mulya and Upadmaniya. Clear? Upadmaniya, this pronunciation is same you are doing. Is it so? हाँ. Same There is a pronunciation. basically name difference है प्रभु जी, only means संज्ञा difference, right? हाँ, ये just for understanding they have made this symbol. You understand? Now in Vedas there is nothing strict. In the Vedas, as per the pronunciation, it naturally comes, because when you recite Vedic mantras, you cannot stop in between. I shared one Vedic chanting, you remember, from Rudri. Yes. Ekadasha Navadasha Chame Panchadasha Chame Sodasa Chame. So there is no stop in between. So if such virga comes, then it will be like Tarunah Karoti, Purusha Khanati. So what There happens is in between? Chamakam Sutram, or what? There is one Chamakam Sutram also, no, Prabhuji? So that is called Jihva Mulya or Upadmaniya. This much it is.
That's why I said it's not important for you guys, but when the context come, you will understand what it is. That's it. Now refaha. आ इत्येतौ वर्जयित्वा स्वरात् परस्य विसर्गस्य स्वरे मृदुव्यञ्जने च परे रेफादेशो भवति. Except a and a out of the vowels. Except. Ichaha parasya. Ich. Mane? E on real rit a on I. So except a, Yes. all the vowels. If they are paravarna, and purva varna will always be visarga, nothing else. Purva varna will always be visarga, and paravarna can be any vowel except a and a. विसर्गस्य स्वरे मृदुव्यञ्जने च रेफादेशो भवति. So kavihi plus iti, kaviriti. So यहाँ पे विसर्ग का first the visarga becomes dantya sa. You will get the sutra visarjanesya saha. I think they must have given it here somewhere. They did not put it. Visarjanesya sa. Then sasa juso ru. You see number 1 sutra sasa juso ru. Okay. Yes. Refadesho bhavati. Ha. So that sa becomes ru, and the u goes away. Ra remains only. Only ra remains. So kavihi plus iti becomes kavi. Visarga becomes sa. Visarjanesya sa. Then sasa juso ru. That sa becomes ru. And then u goes away, ra remains. So kavi plus ra plus iti is equal to kaviri, because ra is a halanta. If you write down, you understand. Kavi plus halanta ra plus iti is equal to kaviriti. So the visarga got converted into ra. Okay. Okay. Kaviriti. Sadhu plus asau. Sadhu rasau. Visarga becomes rat. Very simple. Etaihi plus agatam. Etairagatam. Dhenuhu plus gacchati. Dhenur gacchati. Taihi plus bhakshitam. Taira bhakshitam. So one thing you have to understand, if there is vowel after, if the paravarna is a swaravarna, then it will become ra, like kaviriti. Kaviriti, sadhu rasau, etairagatam. But if the paravarna is a consonant, vyanjana varna, then it will become ref. Visarga will become ref. Keep in mind. So if the paravarna is vowel, it will become ra, like ratana. And if the paravarna is consonant, then it will become ref, which goes on top, like dhenur gacchati. Dhenuhu plus gacchati is equal to dhenur gacchati. So on top. Taihi plus bhakshitam, taira bhakshitam. Taira bhakshitam. Clear? Punaha plus atra, punaratra. Prataha plus gacchati, pratar gacchati. Punaha plus atra, punaratra. Prataha plus gacchati, pratar gacchati. हो गया? तो जब विसर्ग के बाद कोई स्वर वर्ण आएगा तो विसर्ग का रकार हो जाएगा, र बनेगा. और विसर्ग के बाद अगर कोई व्यंजन वर्ण रहेगा तो विसर्ग रे परिवर्तित हो जाएगा. बस सबको समझ में आ गया? It is okay, but punaratra, there again footnote given. Sware pare visargasya vikalpena yakaropi bhavati. Yatha balaya atra lataya edante ramaya gacchati krishnayati. कहाँ पे है ये? नीचे नीचे footnote. अच्छा, फुटनोट. स्वरे परे विसर्गस्य विकल्पेन यकारोपि भवति. हाँ. So these are
लताय एधन्ते। पुनरस्व नीचे पीतिवंदे भी बालात्र इज ऑल्सो सेम थिंग दिस करिंग So रामागच्छति ऑल बालाय अत्र, बालाः प्लस अत्र, बालाः प्लस अत्र, बाला अत्र और बालाय अत्र, लता प्लस एधन्ते, लता प्लस एधन्ते. These are रामाया गच्छति, कृष्ण येति, एष इच्छति. किन्तु यकारोपेतस्य प्रयोगः विरलः. But this kind of application is very, very, very rare. You understand? These are very special, exceptional application which you don't see generally. So this is not so important. Just for information, they have written. Okay. So punaha plus atra, punaratra. प्रातः प्लस गच्छति, प्रातर गच्छति. अव्यय संबंधी विसर्गः स्वराः और मृदु व्यंजनानि. So here they are saying, see, they said that a is not included, but here you can see punaha plus atra, a is written here. But then they are saying that if this a belongs to any abhyaya pada, like atra, yatra, tatra, sarvatra, ekatra, these are abhyaya pada. So if this a comes out of any abhyaya, then this visarga will get converted into ra. So that a will be treated like all other swara varnas. But it has to be from some abhyaya pada. That's it. Pratah plus gacchati, pratar gacchati. This is a normal that we know already. Okay. Rikaranta shabdasya sambodhana sambandha visargaha plus swaraha plus mridu vyanjanani is equal to ra. Pitah vande. Rikaranta shabdasya sambodhana sambandha visargaha plus swaraha plus mridu vyanjanani is equal to ra. So pitah vande is equal to pitar vande. No need to go into so much details. Akarasya akarat parasya visargasya sware mridu vyanjane cha pare ashi lopo bhavati. Balaha atra. This is important. Okay. So balaha plus atra. See, atra is a swara varna. Here also balaratra it can happen, but like punaha plus atra, punaratra it happened. But balaha plus atra, if such comes, then the visarga will get converted into sa, sa will get converted into ra, but then ra will be eliminated. Rakarasya lopaha bhavishyati. It will be eliminated. So there won't be anything. So balaha plus atra is equal to bala atra. That's it. The visarga got converted, then it got eliminated. Lata plus edhante. There is a sutra lopaha shakalyasya. Not sorry, lopaha shakalyasya. There is a different sutra. Karavasana visarjane visarjanesya viramo vasana. So that visarga totally goes away. Lata plus edhante, lata edhante. Taha plus gacchati, ta gacchati. वृद्धा प्लस यान्ति, वृद्धा यान्ति. ऐसे आपको उदाहरण भगवत गीता में बहुत मिलेंगे जहां पे विसर्ग का लोप हो गया है. इसको विसर्ग लोप कहा जाता है. मैंने पहले बताया कि कहीं कहीं पे विसर्ग का कन्वर्जन होगा, कहीं पे विसर्ग का लोप हो जाएगा. तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और फिर लता प्लस एधन्ते, लता एधन्ते रह जाएगा. तो इसको विसर्ग संधि माना जाएगा क्योंकि विसर्ग संधि होने के बाद उसका लोप हो गया है. ठीक है.
प्रभु जी यत्र ये समझ आ गया एक। यत्र पार्थ धनुर्धर, पार्थः था, पार्थ धनुर्धर, पार्थ का विसर्ग का लोप हो गया। यत्र योगेश्वरः कृष्ण, यत्र योगेश्वर कृष्ण, तो यहाँ पे लगेगा प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, योगेश्वर का विसर्ग लोप हो गया है। ठीक है, ऐसे विसर्ग लोप संधि आपको भगवत गीता में बहुत मिलेगा। हो गया। राम प्लस प्रभु आगच्छति। जी हाँ बोलिए। प्रभु जी एक ना वर्ड आ रहा है मृदु व्यंजने, हाँ तो मुझे समझ आ रहा है मृदु व्यंजने जो मुरुधर जैसे श श श वो वाला कैसे जो सेकेंड एंड फोर्थ कॉलम आर कॉल्ड मृदु व्यंजन, काचाटा तप हाँ एंड सेकंड गाजाटा। सो मीन्स हाँ ओके क सेकंड एंड फोर्थ कॉलम जैसे क ख सेकेंड, ख और घ। हाँ सॉरी सेकेंड मैं कह रहा हूँ, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड जो आर सॉफ्ट, कॉल्ड मृदु। जो बेसिकली सॉफ्ट होते हैं राइट, सॉफ्ट हाँ सॉफ्ट स्वर, सॉफ्ट व्यंजन। हाँ। ओके And second column and fourth column, these two are called karkash vyanjan. They are कर्कश tough. बिकॉज यस So mudhu vyanjan ओके are first column and third column. Kachata tapa and gajada daba. These are mridu vyanjan. ओके कर्कश व्यंजन कोई Akarat समझ आ parasya गया। मैं ना थोड़ा थैंक यू। pare mridu vyanjane cha pare lopo bhavati. So that means the purva varna is also a swara varna. See, bala has a, lata, ta, vruddha. This all has a. So this is swara varna. Before the visarga there is a swara varna, and paravarna is mridu vyanjan. See either kachata tapa or gajada dava, gajada dava plus yara lava. This is also considered mridu vyanjan, yara lava. So if these 5, 5, 10 plus 3, 13 letters are there, then also the visarga becomes eliminated. Okay, this is visarga lopa sandhi. अकारात् परस्य विसर्गस्य अकारं वर्जयित्वा स्वरे लोपो भवति। Akarat parah. So the condition is visarga is there, but visarga is coming after akar. Ramah. So a उसके बाद विसर्गा आया, Ramah plus agachati. So when the paravarna is anything apart from a, so a, e, u, re, a, I, o, everything. So except a, if all other swara varnas are there as a paravarna, and purva varna, the visarga is right after a, akaranta visarga. So visarga is there right after, like Ramah. So a, then visarga, Ramah plus agachati. In this case also, the visarga will be eliminated. Rama agachati. Krishna plus eti. So Krishna, a is there, and eti is a vowel which is different than a. So then Krishna eti visarga will also be eliminated. हो गया? एषः सः इत्यनयोः पदयोर् विसर्गस्य अकारं विना यत्किंचित् वर्णे परेपि लोपो भवति. This sutra is specially for Eshaha and Saha. If any letter comes except A, remember, any letter except A, any letter comes after Eshaha or Saha, the Visarga will definitely be eliminated. Very simple. So basically after Eshaha and Saha, all the Visarga can be eliminated. Eshaha Ichchati, Esha Ichchati,
एषः गच्छति, एष गच्छति, सः आगच्छति, स आगच्छति, सः तत्र, स तत्र। तो एषः और स के बाद आ छोड़ के कोई भी वर्ण आ जाए, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, कोई भी आ को छोड़कर, तो वहां पे अवश्य ही विसर्ग का लोप हो जाएगा। आई बात समझ में? यस। अच्छा, अकारं वर्जयित्वा स्वरात् परस्य विसर्गस्य रेफे परे लोपो भवति। लोपे कृते पूर्वस्वरः दीर्घः च भवति। ये एक विशेष सूत्र है, सूत्र लिखा नहीं है इन्होंने। लोपे कृते पूर्वस्वरः दीर्घः च भवति, अव्यय संबंधिन विसर्गस्य अकारात् परस्यापि लोपो भवति। तो this is the sutra where the visarga gets eliminated when the paravarna is ra. Remember, when the paravarna is ra, starts with ra, the visarga, irrespective of any condition, the visarga will be definitely eliminated when the paravarna is ra. So kavihi plus rachayati, kavi rachayati. But after the elimination of the visarga, this Raswa swara will become dirgha. So kavi has short e. Kavihi plus rachayati. Ra is there. So kavihi, e is short. But after the elimination of the visarga, it will become kavi rachayati, long e. Kavi rachayati. Bhanu plus rajate will become, Bhanu was short u. Visarga will go away, but it will become Bhanu rajat. दीर्घ उ हो जाएगा। विसर्ग का लोप होने के बाद ह्रस्व वर्ण का दीर्घ हो जाएगा, भानु राजते। उससे ये पता चलेगा कि यहाँ पे विसर्ग लोप संधि हुआ है। पुनः प्लस रमते, पुनारमते, पुनारमते, तो पुनः का विसर्ग चला गया और अ का आ बन गया, पुनारमते हो गया। ऐसे उकार के लिए क्या है? अकारात् परस्य विसर्गस्य अकारे मृदुव्यंजने परे उकारो भवति। उकारो भवति। उकारे कृते गुणसंधि अवश्यम कर्तव्यम। अकारे परे गुणानंतरम पूर्व रूप संधिरपि करणीयः। इसको हम आगे पढ़ेंगे, अभी एक साथ इतना कुछ पढ़ना ठीक नहीं है, ठीक है? विसर्ग संधि खत्म हो जाएगा एक दिन और कल हम थोड़ा सा पीछे का भी रिवीजन करेंगे, क्योंकि विसर्ग संधि हो गया तो हमारा संधि चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है? जी प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये भी ठीक है बोल रहा है। After that we will go to समास और the sequence in the book, Dadi Prakaran or Karak Prakaran, like that, or direct समास। समास डायरेक्ट, ओके। समास बहुत इंपॉर्टेंट। संधि और समास आ गया तो आप भगवत गीता आदि ग्रंथों का अनुशीलन कर सकते हैं। संधि एंड समास, विदाउट संधि एंड समास you want to understand the shabdas, padas. So to understand the padas, samas and sandhi is very much important. तो संधि क्लास फिर जब नेक्स्ट क्लास में व्यंजन दोबारा से बताइएगा, क्योंकि बहुत लंबी है ना, व्यंजन काफी संधि हैं। There are many names. है, it is easy, but plenty of you can say sandhis. व्यंजन संधि को नहीं के लिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? मैं बोल रहा था व्यंजन संधि इज इजी, बट देर आर मेनी संधिस, और बहुत मतलब सेम एक जैसी ही है, ऑलमोस्ट लुकिंग लाइक सेम टाइप, जस्ट थोड़ा सा ही परवरण और
पूर्व वर्ण में फर्क पड़ता है, दैट्स इट। पर फिर रिपीट कर, थोड़ा सा जल्दी जल्दी मतलब फास्ट वी विल रिपीट दैट। Yeah, definitely. We will repeat all the sandhis. After this, we will repeat all the sandhis. Yes. So before conclusion, we'll discuss about the sandhis very nicely, because without sandhi and samas, you cannot function, you cannot understand you cannot do padacheda. Because in the sloka, padacheda is very important. Padacheda is splitting of the words. Pad ko alag karna. Glanir bhavati bharat is a single word. Glanihi bhavati bharata. This splitting is important. In Vedas also, everywhere. यस प्रभु जी, मैं भागवत पढ़ रहा था ऑनलाइन, मैं देखा कि कोई कैंटो 5 में लास्ट के जो 24-25 अध्याय हैं उसमें लंबे लंबे से श्लोक हैं, मतलब एक ही वर्ड दिख रहा है, पूरा का पूरा एक पूरा सेंटेंस में एक ही वर्ड है। वो पांचवा स्कंद तो काफी पूरा है। सही बोल रहे हो। पांचवा स्कंद मेरा भी दांत टूट गए थे पढ़ने में। पंचम स्कंद मैं में पढ़ वो रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है पंचम इन द 5th कैंटो पंचम स्कंद है वो पंचम नहीं, लास्ट। हाँ, गद्याकार में है, इट्स इन अ प्रोज फॉर्म, दैट्स व्हाई इट्स मोर डिफिकल्ट। यस यस, तो दैट इज पूरा व्हाई। पूरा मैं हाँ बोलिए, यस, बोलिए। मैं देख के कैसे बड़े बड़े गीता में इतने डिफिकल्ट नहीं है, भगवत गीता। See, look at this word. It's a single word. You see, from here to here is a single word. You see, this is all single. Yes, yes. This is single word. श्री This लाल is बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। हाँ, जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय। This is a single word, and this is possible because of sandhi. So unless you don't know the sandhi, you won't be able to split the sandhi, and unless you split the sandhi, you won't be able to understand the shabdas, padas. प्रभु जी, एक जस्ट छोटा सा क्वेरी थी। जैसे अभी क्या है, जो हमारा एक संधि करते थे ना, जिसमें एस टाइप का कैरेक्टर आता है, जो आ को एस में, आ को जब 2 आ जाते तो एक को परवर्ण वाले को कन्वर्ट कर देते थे ना एस कनेक्टर में। जैसे बोलते हैं जदपि, और जद प्लस अपी हो जाता था, उसको करते कुछ ऐसा मेरे को अभी, जैसे जय दिकम, जैसे जय दिकम गीत गीत में शुरू में ना जय दिकम, तो वो हम बोलना कैसे है, जय अधिकम और जय दिकम? जयतेधिकम, 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 जयति तेधिकम, सॉरी, जयति तेधिकम, ते प्लस अधिकम, दिस इज कॉल्ड पूर्व रूप। सुनिए, पूर्व रूप संधि। A plus adhikam, the A gets assimilated with A. Okay, because if A was letter and first was A, then there is a chance of vriddhi sandhi. But here it is reverse. A is before, A is later. So both are vowels, but there is no sandhi possible. So then there is a purva savarna, purva roop sandhi, that A gets assimilated and only the khandakar remains. So jayati te dhikam te will be pronounced as it is, and khanda A like S will remain. That shows that there was an A here, but that is not pronounced. Okay. Thank you, Prabhu. Purva sandhi, pararup sandhi, this we have studied already. These are part of ach sandhi, means vowel sandhi. So there are 3 types of sandhi: ach sandhi, hal sandhi, and visarga sandhi.
विसर्ग And संधि। in Hal Sandhi, there is a particular type of Sandhi that is called Anunasik Sandhi. So where the nasal sound comes. हाँ. Okay? जी बिल्कुल। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी अब दिवाली में 1 वीक का ब्रेक देंगे, हाँ, कब है कंटिन्यू दिवाली? करेंगे। दिवाली 1st की है, हम लोग वृंदावन आएंगे, 31st को निकलेंगे। वो अनाउंसमेंट प्रदीप्त गौरांग करेंगे, अकॉर्डिंगली छुट्टी रखेंगे, अवश्य ही दिवाली में छुट्टी रहेगी, थैंक यू। डेफिनेटली। तो आप लोग क्या अनाउंसमेंट हो रहा है? प्रभु जी स्कूलों में 27 से लेके 3rd तक छुट्टियां हैं हमारे। प्रीति भोज का अनाउंसमेंट हो रहा है क्या? हाँ हाँ प्रभु जी आइए, प्रीति भोज करा प्रीति भोज का अनाउंसमेंट हो रहा है क्या? हाँ हाँ अनाउंसमेंट आइए, सब वृंदावन में आइए, फिर प्रीति भोज करेंगे। हाँ अरे तो हम तो वृंदावन में ही है। अच्छा वृंदावन, ठीक है, हम लोग आएंगे तो आपसे मिलेंगे, प्रभु जी से मिलेंगे प्रभु जी। तो दिस ऑल थिंग्स जो भी है छुट्टी से संबंधित, ये लोग आपस में आप लोग डिस्कशन करके यू विल लेट मी नो कि कब मुझे छुट्टी करना है। आई विल जस्ट गिव यू ऑफ डे, you discuss and you give me the conclusion. Pradipta Gauranga can write down in the group that this day to this day we are going to have holiday. I'll give you off day, no problem. And then we will move on to Samas. But before going to Samas, Sandhi has to be very clean. Because without Sandhi and Samas, you cannot function anywhere. देखिए कितना पर्सेंट बढ़ा। हाँ? क्या कह रहे हैं सर्वदेव? हाँ, समास संधि बहुत अत्यावश्यक है। समास संधि को जिन्होंने अच्छी तरह से समझ लिया, उनके लिए पदच्छेद करना कोई बड़ी बात नहीं होगा। और बाद में हम श्लोकों का अन्वय करना सिखाएंगे, तो जब अन्वय करना सिखाएंगे उस समय संधि और समास की विशेष आवश्यकता होगी। चलिए, मुझे बच्चे को थोड़ा बाहर ले जाना पड़ेगा, ये उसका घूमने का समय। अभी वो मेरे पीछे तंग हरे करेगा। कृष्ण प्रभु। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। आप लोग सभी ऐसे ही आते रहिए और क्लास में योगदान दीजिए, ऐसा नहीं कि कभी कभार आ गए आप लोग। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै स्वेनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरे कृष्ण। कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे हरे कृष्णा। हरे। हरि बोल।